Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you friends? I'm Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. आज के क्लास में हम पढ़ेंगे kinds of subject. इससे पहले जो हमने क्लासेस ली उसमें हमने ये समझा types of subject कि what is subject, what is simple subject, complete subject, compound subject and dummy subject. In today's class we're going to discuss what are the different kinds of subject कि सब्जेक्ट किन किन डिफरेंट काइंड्स में आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करें और दोस्तों के साथ उसको शेयर करें और हमें अपने कीमती कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। क्लास बेसिकली जो सब्जेक्ट हैं आप यूँ समझे कि 10 डिफरेंट काइंड्स में सब्जेक्ट आप जुमले में 10 मुख्तलिफ फॉर्म्स में आप सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है व्हाट इज सब्जेक्ट, हमने इससे पहले जाना था कि द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो सेंटेंस में जो काम करता है, मे बी पर्सन और एनिमल और एनीथिंग, एक्टर और एक्ट्रेस, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट या जुमला जिसके बारे में हो, विच द सेंटेंस इज अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, Ali is playing. Ali is playing. In this sentence, who is playing? Ali. So Ali is the subject of this sentence. For example, if I say Saif is a teacher. So there is no action, but ये जुमला किसके बारे में? Saif के बारे में है। तो ये हमारा क्या है? Subject। और सब्जेक्ट अमूमन जुमले के स्टार्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। आज के क्लास में हम इसके डिफरेंट काइंड्स को देखने समझने की कोशिश करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन जो आप सेंटेंस सब्जेक्ट को जिस फॉर्म में देख सकते हैं वो होता है नाउन। द वेरी फर्स्ट वन, नाउन। नाउन कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। नाउन में है जिस तरह हमारे पास डिफरेंट नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे जो है दे कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से बॉय इज रनिंग ऑन द रोड, सो बॉय इट्स अ कॉमन नाउन, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। इसको हम प्रॉपर भी कर सकते हैं। लतीफ ड्राइव्स अ कार। हु ड्राइव्स अ कार? लतीफ ड्राइव्स अ कार। नाउ इन दिस सेंटेंस लतीफ इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी इज फाइटिंग, आर्मी इज फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ द स्टेट। आर्मी जो है वो मुल्क के दिफा के लिए काम लड़ते हैं। आर्मी, सो इन दिस सेंटेंस आर्मी जो हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इट कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे आपको पता है दैट वी कैन नॉट सी और टच और फील और टेस्ट और हियर, वो हमारे पास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी is the best policy. What is the best policy? Honesty. Honesty is the subject of this sentence. तो ये हमने देखा कि noun जो है वो that can be the subject of a sentence। जितने दुनिया के अंदर जितने लोग हैं they can be the subject of a sentence। जितने एनिमल्स हैं, जितने सारे नाउन्स हैं, they can be the subject of a sentence। तो हमारे फर्स्ट द वेरी फर्स्ट क्या है? नाउन।
सेकेंड हमारे पास है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज को हम कंप्लीट सब्जेक्ट भी बोलते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। व्हाट इज नाउन फ्रेज और कंप्लीट सब्जेक्ट? जब सिंपल नाउन के साथ कुछ दूसरे अल्फाज हो, वो एक्ट करे एज ए सब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं नाउन फ्रेज और कंप्लीट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द टॉल मैन is playing volleyball. The tall man is playing volleyball. Who is playing volleyball? So the tall man. यहां तक आपका जो ये सब्जेक्ट है ये किस फॉर्म में है? फ्रेजल फॉर्म में है। तो इसको हम बोलते हैं एज अ नाउन फ्रेज और कंप्लीट सब्जेक्ट। थर्ड हमारे पास नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है, वो प्रोनाउन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। प्रोनाउन, दोज वर्ड्स वी टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन, जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास प्रोनाउन की बहुत सारी किस्में हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इस किस्म के और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। लेकिन कॉमनली हम वही पर्सनल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। You can pass this test. Who can pass the test? You. You हमारे पास क्या है? एक प्रोनाउन है यहां पे एज अ सब्जेक्ट। और we were waiting for the train. We are waiting for the train. We हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है एंड सब्जेक्ट है। तो हमने जाना कि नाउन सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, कैन बी अ नाउन फ्रेज एंड कैन बी अ प्रोनाउन। अब नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4, it can be an infinitive. What is infinitive? 2 plus verb की first form, 2 plus first form of the verb. To go, to read, to set, to allow, to recite. और ये ध्यान में याद रखें कि ये मेजॉरिटी जब हम इसको जुमले के स्टार्ट में लेते हैं तो दे एक्ट एज अ नाउन। ये नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू रीड is a fun, is a good habit. To read is a good habit. पढ़ना जो है ये अच्छी आदत है। To read is a good habit. और to run is important for health. To run is important for. Next हमारे पास है number 5, infinitive phrase. What is phrase? Group of words. ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ना हो उसको हम बोलते फ्रेज। सो इन्फिनेटिव फ्रेज मीन कि इसमें इन्फिनेटिव के साथ कुछ और अल्फाज होते हैं जिसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू डू गुड थिंग्स, यहाँ तक टू डू गुड थिंग्स यहाँ ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। लेकिन जहन में ये बात हमेशा याद रखें कि इसको हम लेते हैं एज अ सिंगल नाउन, एज अ सिंगल यूनिट, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। टू डू गुड थिंग्स इज नॉट इजी।
ओके, नेक्स्ट है टू ईट गुड फूड कीप्स यू हेल्थी। टू ईट गुड फूड कीप्स यू हेल्थी, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 6 पे आता है वो है जेरेंट। जेरेंट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जेरेंट नंबर 6, व्हाट इज जेरेंट? सो ये वर्ब प्लस ing को जब हम यूज करते हैं एज अ नाउन, नॉट एज एन एक्शन वर्ब। जब हम, फॉर एग्जाम्पल, if I say I am swimming, so in this sentence swimming is an action that I'm doing, I'm swimming right now. But अगर मैं बोलूं swimming is a fun, so yeah, in this sentence swimming, what is fun? Swimming. So swimming is the subject of this sentence, and this is gerund, this is the noun. Clear? Reading makes me happy. पढ़ने से मैं खुश होता हूं. So in this sentence, reading is a gerund. It's not an action verb. So they are the subject of a sentence. Number 7, it can be a gerund phrase. What is gerund phrase? Again, इस gerund के साथ अगर हम कुछ और लफ्ज लगा लेते हैं तो इस क्या बनता है? Phrase. इसमें, लेकिन इसमें basically gerund होना चाहिए. For example, writing good essays again वही बात कि जो फ्रेज होता है इसको हम लेते हैं एज अ सिंगल सब्जेक्ट. ये हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट है. राइटिंग गुड एसेज इज writing good essays is essential for improving writing expression. Writing good essays is essential for improving writing expression. So यहाँ पे जो है writing good essays, यहाँ तक ये हमारे क्या है? gerund phrase है. एक और मिसाल ले लेते हैं. Playing in the mud keeps the baby busy. Playing in the mud keeps the baby busy. जो बच्चे मड में खेलते हैं, कीचड़ वगैरह में खेलते हैं, तो बच्चे वहाँ पे बहुत मसरूफ रहते हैं. Playing in the mud. So यहाँ तक कि हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है gerund phrase. Next number 8 ले लेते हैं. Compound subject. Compound subject means more than one subject. Anis and Hamid are going to the movie.
So in this sentence, two persons, Anis and Hamid, are going to the movie. So who are going to the movie? Two, Anis and Hamid. Okay, it can be pronounced to you and I will attend the meeting. You and I will attend the meeting. तुम, आप और मैं अब मीटिंग में जाएंगे. So again compound subject. And the last, the number 9, dummy subject. जो हमारे पास दो है, it and there. Actually they are not the original subject. ये असल में subjects नहीं है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं as a subject जब हमारे पास actual subject मौजूद ना हो. For example, it is raining. It is raining. बारिश हो रही है. So in this sentence there is no action of it. यहाँ पे बारिश तो cloud से बरसते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इट का कोई मीनिंग नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है. इसको हम बोलते हैं डमी सब्जेक्ट. और वेयर जब हम किसी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए शो करते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम. हम कहते हैं यार एक मसला है, देयर इज अ प्रॉब्लम. सो इन दिस सेंटेंस प्रॉब्लम की जो कोई वजह है तो कोई और होगी, लेकिन देयर को हमने यूज किया एज अ डमी सब्जेक्ट. एंड नंबर 10 हमारे पास है नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज नंबर 10, द लास्ट वन हमारे पास है नाउन क्लॉज. What is class? क्लास फ्रेज से थोड़ा उसकी वैल्यू ज्यादा है. इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग समटाइम्स. नाउन क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लास की 3 जो मेन किस्में हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, उसमें एक काइंड है जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट. अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. Whoever you want, you can invite him. Whoever you want, you can invite him. So whoever you want, you can invite whom or you can invite what, whoever you want. So this is a clause. ये हमारे पास क्या है, क्योंकि इसमें ये you जो है subject है and want इसमें क्या है, verb है. तो this can also act as the subject of the sentence. आज के क्लास में हमने जाना कि सिर्फ ये नहीं है कि कोई आई, वी, यू, दे या कोई नाउन हमारे पास सब्जेक्ट्स हो सकते हैं. हमने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया. उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपने कुछ नया सीखा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक करें, हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.